Hey guys, welcome back to the new episode of Inexperienced. Today's guest is a content creator, a hustler, and a friend, Anupam Pandey. The conversation that we had was fun and insightful. We talked about the current scene of content on LinkedIn and also how colleges are providing job opportunities to students. Uh, the content was full of, I would say, tips and also some jokes. I had a great time talking with Anupam. I hope you enjoy the episode too. The episode begins in three, two, one. So Anupam, hi, hi. So how's things are going, bro? First of all, you live in Vadodara, right? If I'm getting it right, or Ahmedabad. Yeah, I live in Baroda. Baroda, okay, now Yeah, I Vadodara. actually live in Baroda like for the last 14 years. टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे It's the यहाँ पे? same thing actually. पहले हाँ temperature यार it's hot here because it's around Ahmedabad ना the tropic of हाँ Cancer, so थोड़ा temperature high रहता है. Around 43 टेम्परेचर 44 as of now. 50 अच्छा reach करेगा ये with time. 50 50 जाता है डिग्री जाता है आराम से 50 जाता है. डिग्री चल जाता है ब्रो यहाँ लाइक हाँ, आई अहमदाबाद में तो 50 पक्का जाता है. इधर 47 48 तो बिल्कुल जाता है. हाँ 48 तो यहाँ तक भी जाता है कभी कभी यहाँ हमेशा नहीं जाता बट 45 तो फिक्स है 48 का कोई कोई ईयर पे चल जाता है हम्म. दैट इज ट्रू हाँ नो ब्रो लाइक अभी फैन बंद है ना तो गर्मी याद आ रही है चेक करते अभी भी चेक करते रहे कि भाई सही फैन बात है. चालू है कि नहीं है नहीं सीधा नुकसान तो है सो लाइक ऐसे तो आई वुडंट से कि प्रिपरेशन नहीं है बट लाइक I try to keep things हम्म. very free flowing. But I have few things that have been like I kind of stalked you, bro, for the last day. I don't know if it makes you feel validated. So yeah. No, no, that's fine. That's That's not fine, an bro. issue at all. You're okay with attention. Yeah, I can see that. Yeah, yeah, yeah. Yeah. I get that. नहीं see. No, no, app was like Instagram. Instagram, I saw that you deleted your पहले वाले posts. ऐसा है क्या case? Yeah, the thing is that I want to do something like I'm planning to do something on Instagram also, हाँ. and इसके लिए I'm starting a bit fresh. Yeah. Other thing is I've got some free time right now. That's Mm, another thing. mm, And like there's some plans. So due to that, and normally we लोग करते हैं ना आजकल हमारा like generation at times mm. they want to start something new, Mm. and it's a good Instagram page, right? It has around 1K odd connection. So why not start from there itself? So या मेक सेंस मतलब भाई जितने भी प्लान्स हैं एक्सपोज नहीं करने यूट्यूब पे नहीं नहीं गलती से 20 लोगों ने देख लिया तो 20 लोगों को प्लान पता चल जाएगा राइट राइट नो बट एक्चुअली प्लान्स यार देख हाँ यार मतलब मैं एक यूट्यूब पे एक मार्केटिंग चैनल चालू कर रहा हूँ दैट ओके इज समथिंग ऑन अ पर्सनल नोट so हम्म that's the reason I'm growing. You might have seen one post I guess on Instagram, and two I've posted on YouTube, but I'm working on it. I'm learning a lot of things for that also, something out of my comfort zone a हम्म, bit. थोड़ा अभी अभी वीडियो एडिटिंग और ये सब अभी you know हाँ my like what I'm actually specialized in and what's my interest, so I am या trying to get some interest there it's या also. वीडियो एडिटिंग अगर वीडियो एडिटिंग लाइक फिल्म मेकिंग या इफ इट डजंट टीचेस यू इट्स जस्ट लाइक ओके हाँ लाइक वीडियो एडिटिंग कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो पेशेंस वो तो है. वो वो तो that's है right. I'm not ब्रो in a fast train mood यार. अब हाँ I have passed my B.Tech. I know फास्ट होके कोई मतलब कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट? वो वाला. आई थिंक लाइक फास्ट या स्लो का इशू नहीं है आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग द अवेयरनेस कि कहाँ पे फास्ट होना है कहाँ पे स्लो होना है आई थिंक हाँ, दैट्स द ये की that depends on person to person, हम्म the thought process and all, and how fast you can grab हम्म things, work on हम्म things. That's the thing. So depends from person. Like you can't judge someone कि यार too fast या too slow है. Maybe his pace or maybe his interest there is much more, right? So he'll get there too like early. That's the thing. ऑल्सो लाइक
which phase you are in life, or maybe what you're working on. Like sometimes what happens is that if you're doing something, it requires brutal force to move it, right? And sometimes you can play a relaxed game and still win. So it's also, I think in my observation, it's also have the awareness of कौन सा game कैसे खेलना है, वो भी important है, right? Right. So, uh, talking about myself, I'm presently working as a graduate engineer trainee at JSW Steel, and I completed my BTech in electrical engineering last May or June. So, but apart from that, I've headed the marketing team at Learn for Cause and even the sales team. And apart from that, I've been a part of lot of startups. And primarily, one of the main things that I've learned over the last 2 years or maybe during the COVID time is that startups is one of the best things to work because uh, Hmm. it gives you a lot of freedom also, and you make mistakes and you learn. That's one thing, right? And even working in a multinational like JSW is a very good thing for me because actually I meet a lot of people, that too Yeah. offline, so possibly I'm learning a lot of things, and it's actually helping me grow only, right? It's something I'm on the path to what I want to become, is what I Wow. can say as of now. Makes sense. भाई भाई सब इतना भारी भारी, how do you remember like that's an introduction, bro? I'm यार like अब ऐसी चीज है ना कि हाँ जब प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो यू हैव टू बी ऑन योर, इट हैज टू बी ऑन योर लाइक टंग, राइट? कि मतलब यार कि यही है, ये तो बोलना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। यही तो हम्म मेरा मेन चीज है मेरे जिंदगी में। हम्म अगर मैं यही भूल जाऊंगा तो मैं कौन हूँ? हाउ डू आई मेक हम्म माई सेल्फ अ पर्सनल ब्रांड? दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेक मी अ पर्सनल हाँ ब्रांड, राइट? हम्म सो हम्म Ashneer Grover, you might know I'm a bit of a fan of him, right? And yeah at times there have been places जब थोड़े से wordings मेरे उनके जैसे निकल जाते हैं. So the अच्छा thing is that I possibly go to all the things that he's doing right now, and even yeah his present startup that he's working हम्म into, right? And yeah the yeah way he connects with people, and yeah you might even know that anyone who's joining his startup will be gifting them a BMW, right? That's अच्छा another मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लाइक पता नहीं कहाँ हाँ से आता है, ठीक है? सो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। सो अच्छा यार मतलब है बस। सही है यार। So I'm just waiting कि like इस podcast में when you wanna call out me as दोगला, दोगलापन, maybe use the word, so maybe I have to be a bit more तू दोगला नहीं है यार, मतलब लाइक आई लव हिज लाइन्स, लाइक यार ये तू सही नहीं कर रहा है, ठीक है? ये इससे नहीं होगा, इससे हाँ कुछ ये नहीं बनना क्या है। कर रहा है तू, धंधा बनाना है भाई, तू धंधा बना रहा है, स्टार्टअप थोड़ी कर रहा है तू। ये सब बंद कर दो, ठीक है? इससे अच्छा है जाके तो कुछ जॉब कर लो। Jacks. Like I have my disagreements with him कुछ Yeah. चीजों पे, but हाँ I'll get होनी चाहिए यार, होनी चाहिए, मतलब हाँ अब हर चीज तो एकदम 100% नहीं हो सकता है, बट हाँ। ही इज वन ऑफ दो स्टॉलवर्ट्स, राइट? सो यू शुड एक्चुअली लिसन टू हिम एंड मे बी टेक अ थिंग और टू फ्रॉम हिम, राइट? इफ नॉट If it एवरीथिंग। makes sense to you, या हाँ राइट। if it does make sense to you, take it away. Like अब if we talk about Aman Gupta, उसका जो coolness है, that is one of the हाँ factors that I would like to take. Like even after making like such a big brand like boat himself, still he's that cool, and even on the sets, and even other sharks also say कि सबसे cool या सबसे जो नटखट है वो Aman Gupta ही है. So it's a different sort of a figure, something that the present young generation would like. And Aman Gupta is one of the most followed people, right? Due to that, one of those reasons. like I think I when I was going through your and have it's more not necessarily more like more on a philosophical side. It's like I was going through your profile and उसमें एक post है, you have made a post about Sudha Murthy, right? Yeah. Like where she's making, I don't know what's the word of the food or prasad out of a temple, right? And this is something that interests me a lot about money, right? Like see at some point everybody, you know or I know, at somebody our parents or grandparents were at some point poor, right? With India economic situation ये रहा है कि everybody was at some point was poor and they made it to the जो भी point पे they have made it, right? So when I look this
when I go through this post, you or anybody else, I'm like not pointing it out. It's just कि मेरे को sometimes I find it surprising when people find the normal acts of rich people as an act of humbleness. Okay. Like Yes. See, my the point. thing is, हाँ no, हाँ no, नहीं no. I नहीं totally get it. I नहीं totally get my it. point like क्योंकि I think the problem with that is not the money kind of making you arrogant. Like ऐसा नहीं कि होता नहीं है, but my point being is like जो इंडिया में जो narrative है ना मनी को लेके, it's not very clear that like the whole point, a lot of even Naval says that भाई पैसे बना रहे बंदा कुछ गलत तो काम कर रहा होगा, which like या जल्दी पैसे बन रहे हैं तो भाई कोई तो ट्राई वो पिरामिड स्कीम है उससे पैसे बन रहे हैं। I'm not saying कि ये चीजें होती नहीं है, बट जो नैरेटिव है sometimes it surprises me like someone like Aman Gupta who is just being himself. He's not trying to be cool. He is just cool. वो उसका nature है, right? And people sometimes call it कि क्योंकि I think it's also कि you don't meet Aman Gupta in person, right? You have a perception of him. तुमने शार्क टैंक पे देखा है कि वो कूल है तो वो कूल है, राइट? यू इफ यू नोन हिम फॉर लाइक 20 years यू लाइक हाँ बंदा अलग थोड़ी कर रहा है, कुछ वही तो है, No, no, no. राइट? But there is a point. I have हाँ actually like seen posts and even normal people like us who have worked with him for years, and even हाँ students who have been intern with him. हम्म One like उन्होंने और भी काफी बड़े companies नाइका and हाँ all में भी internship किया, but they were all praised about Aman Gupta. He has something like it's like everyone हाँ can't be wrong, right? I've never seen something ऑफ negative कोर्स about him. Like एक हाँ perception नहीं बना है and हम्म अबाउट मनी यार देख, चीज तो ये भी सच है कि लोग स्टार्टअप्स को बहुत नेगेटिवली लेते हैं इंडिया में इवन हाँ नाउ। तू हाँ स्टार्टअप में काम कर रहा है, तू पैसा बना रहा है, दैट मीन्स कि झोल तो है भाई, तो झोल है झोल तो भाई, है ठीक भाई, है। हाँ बट द हाँ हाँ थिंग इज यार, इफ someone does not want to stay in the population of 95% and wants to climb up into those top 5% earning people, I don't think so it's wrong, right? There are a lot of other unicorns who have even proved that. But ऑफ the कोर्स thing is yaar, abhi it money, I can even relate to aunties around, right? They have हाँ हाँ perception about या everything you या can talk about. Just the हाँ same हाँ way money is like कुछ लोग बोलेंगे यार यार इतना पैसा सही है, उतना पैसा सही है, बट हम्म what I feel is कि यार I might be wrong also, but the हाँ thing हाँ is कि यार पैसा आप कितना भी कमाओ, the main thing should be that you should try to do something good for yourself and हाँ even हाँ for the people also. आप कैसे भी या करो, right? कैसे भी Now करो, Sudha हाँ Murthy's case is यार ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे लाइक celebrities है, known people हम्म from various हम्म areas who are doing something for the people. For हाँ example, Virat Kohli, he has opened a foundation where he is totally funding ओके cricketers and other sportsmen also who want to actually pursue in their something in their field, and they ओके are not able to actually pay so high enough for a हम्म month of training also, right? So he हम्म is doing he has his foundation, right? या Just the same way you would have seen a lot of stars, actors, no matter वो कैसा भी काम कर रहे हो, हाँ द थिंग इज परसेप्शन तो ये भी है कि मीडिया में भी गलत चीजें फैलाए जाते हैं अबाउट सम पीपल, राइट? हाँ सो हाँ आई डोंट ट्रस्ट द मीडिया ब्लाइंडली, दैट्स वन थिंग, राइट? I would rather trust people who might have worked with them or who know them or या something like that. या और अगर वो नहीं है तो मैं परसेप्शन नहीं बनाऊंगा। जैसे आप देखो हाँ कुछ एक्टर्स के बारे में कुछ बुरा सीधा कुछ भी कहते हैं, राइट? आई इफ समवन आस्क मी आई वोंट इवन स्पीक अ वर्ड। द थिंग इज क्यों ही क्या ही जा रहा है, द थिंग इज till I don't have an accurate proof, या and just through the media thing, I can't. You might even know that या India's media does not even rank in the top 50, right? आई It's गेस even या before below Pakistan as of now. रियली डैम Yes, I ओके guess it's. दैट I'm not sure about the rank, ओके ओके but है कुछ है. हाँ ब्रो Some लाइक there's we're some just two media. guys just talking about things, we are not Yeah, experts, हाँ. if right, you're right, if a right. woke person is listening or watching to this, just letting you know. Yeah, but the point being like what surprises me is that ki how easily people correlate money and arrogance, Right. right? Depends on person to person also, right? There are हाँ some नहीं, people I'm not जो saying not, पैसा बहुत कमा रहे हाँ नहीं मैं पॉइंट बेइंग कि वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रहा है, बट ऑन अ मास लेवल पीपल लाइक कि अब पैसा आएगा तो बंदा के पास एरोगेंस आ ही जाएगा, इट्स लाइक प्री डिसाइडेड,
वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, एंड देन पीपल हु डोंट फॉलो दैट स्क्रिप्ट एंड दे लाइक अच्छा अच्छा हम्बल, व्हिच इज दे बीइंग themselves. Like Sudha Murthy would have done the same thing, even she wouldn't be like whatever position she is, right? मेरा कहने का मतलब वो है, sometimes it happens, sometimes people are genuinely just cool. They're like उन्हें पैसा बना रहा है, but they have a personality. It's just कि we हमें इतनी स्टोरी सुनाई जाती हैं, राइट? कि लाइक सीन तारक मेहता, राइट? Yeah. तारक मेहता देखा होगा, तो जेठालाल है, he has a lot of money, and there's one guy called भिड़े, भिड़े, राइट? आत्मा नाम तो कराम भिड़े, जो जो कि इकोनॉमिकली दे आर डिफरेंट, राइट? एंड बहुत सारे एपिसोड्स है जहां पर भिड़े काइंड ऑफ pokes him about having money and that's why he's arrogant, right? So when you hear that, when you are like at 10 or 11 of age, right, subconsciously it goes into your head कि like अच्छा पैसा है तो घमंड है, right? That's how content decides your narrative about different things in life. That's what I'm trying to say कि ये कितना like subconsciously कितने सारी चीजें फीड होती है हमें, जो कि हमें when we grow we like this is not the case, right? ट्रू ट्रू पर्सपेक्टिव है यार, दैट्स द पर्सपेक्टिव। हाँ ये वही वाली चीज हो गई, जैसे हम ग्रो रहे थे तो हाँ पेरेंट्स बोलते थे अरे यार 10th में पढ़ ले अच्छे से, मार्क्स ला ले, आगे तो लाइफ चिल है। 12th में हाँ पढ़ ले, लाइफ चिल है। कॉलेज में लाइफ चिल है। आज मैं जॉब कर हाँ रहा हूँ तभी भी मेरे को नहीं लग रहा लाइफ चिल है। तो हाउ डू आई इवन टेक दैट? सो नाउ वी रियलाइज, वी टेंड टू रियलाइज थिंग्स व्हेन वी एक्चुअली फॉल इनटू दैट, राइट? नाउ आई इवन रियलाइज हाउ टफ वुड इट बी फॉर माय फादर टू हम्म like earn money, right? And हम्म, because I am doing it myself now, या so I am even seeing these 17 18 years kids right now. Kids तो नहीं बोलूंगा, but किड्स yeah, नहीं बोलूंगा, हाँ ब्रो, लाइक ज्यादा हो जाएगा वो, हाँ 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 they are grown ups now, हाँ 18 19 or something, first year in college. हम्म, They have not even been into the professional world, and या they tend to speak so much on LinkedIn, and हाँ they put a या post like anything. हाँ Till the time you don't experience now yourself, या there is no point doing that, right? गूगल पे आर्टिकल सर्च किया, पहली दो लाइन कॉपी मार ली, हैशटैग एक्सपीरियंस, हैशटैग एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं, हाँ हैशटैग मैं वो डालूंगा या डालूंगी जो काफी ज्यादा वायरल यूज होगा, हो रहा है, काफी ज्यादा हाँ वायरल वायरल हो होगा, चुकी है। रिलेवेंट नहीं होगा, मैं वही वायरल डालूंगा। होगा, हाँ, रेलेवेंट अरे नहीं होगा, कुछ कुछ वायरल होगा, जगह तो हाँ हाँ जहां नहीं डालना चाहिए वहां भी एचआर और ये सब डाल हाँ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक्सेल पता नहीं आर्टिकल होता है क्यों। वो, क्यों बच रहा है वो, नहीं, हाँ लिंक्डइन पे एचआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वेयर अ लॉट ऑफ हाँ पीपल वांट टू गेट जॉब्स, या राइट? You'll find एग्जैक्ट, HRs from even medium companies also हम्म, having lots of connection because they're actually helping out people some way or the other, right? या They're या HRs after all, right? तो हम्म लोग HR हैशटैग तो ऐसे यूज करते हैं कि वही ओन करते हैं भाई साहब। That's how it. Yeah. Acha, to the 10th and 12th point, I have something to tell. Acha, just hold on a second, huh? आज पूरी गर्मी में रिकॉर्डिंग हुई भाई साहब, कोई नहीं ब्रो, लाइक ऐसे लाइट्स नहीं जाएंगे ब्रो, ऐसे सब चकाचक चलेगा। हाँ वो कट आई एडिट ना, नहीं 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 चिल चिल नहीं चिल, आवाज नहीं चाहिए मेरे को थोड़ी। हाँ इफ यू वांट आई विल कट इट आउट, ये तो अभी जो पॉइंट व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फिर वहां पे आएगा, अदरवाइज आई कीप वेरी। हाँ अभी तक सही जा रहा है, चिल है चिल है चिल है, हाँ 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 कोई इशू नहीं है। सी सी द पॉइंट दैट आई एम सेइंग अबाउट द 10th एंड 12th, जो पहले मेक सेंस नहीं करता था, अब कुछ एक्सटेंट तक आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ डूइंग योर 10th एंड 12th राइट नाउ, अभी मेरे को समझ आता है, एंड आई शेयर व्हाई, एंड दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन। कूल, यू डोंट नो हु जॉर्डन पीटरसन इज? नहीं यार, अब हर इंसान को तो नहीं जान अच्छा सकता cool cool इंडिया में। okay okay, he's a Canadian clinic psychologist, kind of famous on YouTube and all. He speaks about positivity about men, and just shares wisdom about being life. You should check out his content, great man, cool. He shared something that ki people who go to Harvard universities like Harvard or Stanford, लोगों को लगता है वो स्मार्ट है, but the point being they're not necessarily smart because they're studying in Stanford or Harvard. It's because they made it to Harvard and Stanford. आईआईटी के जो बच्चे जाते हैं वो इसलिए स्मार्ट नहीं क्योंकि आईआईटी में पढ़ रहे हैं, इट्स लाइक दे मेड इट टू आईआईटी। कितने बच्चे हर साल तैयारी कर रहे हैं, बट वेरी फ्यू पीपल मेड इट टू दैट पॉइंट,
So this is when I less than 1%, bro. when less than 1%, and it's like purely competence. It's not like आप पैसे देके चल जाओगे. It's purely competence. Competence. Either you crack the exam or you don't crack the exam. Simple as that. It's on your face. कि या नहीं किया तो नहीं किया. Somebody came and beat you. Simple as that. So he was, and when I heard this point, something kind of clicked in my head. It was like why 10th and 12th is important because it can heavily influence your environment. Suppose you, let me complete my whole point. Like 11 12 may you scored very good, right? The chances of you getting in a good college just increases, right? And when you go from a suppose like tier 2 city जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है एआई क्या कर सकता है, दे आर सिटिंग कि हाँ भाई आराम से डिग्री लेंगे, जॉब मिलेगा, अगली 10 लाख सेट है, उन्हें पता ही नहीं है अगले 5 साल में उनकी पॉसिबल है कि उनकी जॉब भी ना रहे, राइट? अवेयरनेस ही नहीं है. एंड देन यू मेक इट टू मे बी न्यूयॉर्क जहाँ पे इतनी चीजें फास्ट चल रही है, जहाँ पे यू कांट कीप अप, राइट? द पॉइंट बिंग वहां पे कम से कम सी वहां पे मे बी हार्ड हो सकता है, बट एटलीस्ट यू हैव द इन्वायरमेंट टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू. अगर बुरे कॉलेज में गए वहां तो इन्वायरमेंट ही नहीं अडेप्ट करने को. So what happens is that, and suppose you made it to good college, फिर वहां पे अच्छे से पढ़ाई की. So what you will have, the starting company that you can get is like Google and Microsoft, right? For example, सब कॉलेज में listening, like मान लो जो टॉप टायर कॉलेजेस हैं वहां पे आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेजुएट लेवल पे भी कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट कम टू हायर. Yeah, but I have a lot of things to speak on this actually. अच्छा, let me the correct who complete the whole point. This is my hypothesis, right? तो वहां पे चल गया. So my point being, if you can just focus on studying on 12, ऐसा नहीं है कि going, maybe I'm romanticizing the whole idea to going to a good college will change your whole life. The point being कि there's one college in tier 2 city जहाँ पे you don't even have an access to anything, or maybe you go to a good college जहाँ पे maybe you have the access, maybe that course doesn't work out for you, maybe you think कि वहाँ की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, but the having the exposure to figure out कि वो काम नहीं कर रहा है, वो कभी कभी मिलता ही नहीं है if you don't make it good in your 10 and 12. That's why it kind of made sense to me कि if you work good in 11 you make good college, if you work in good college there's a potential you made it in a good company. Because I've worked with people who have worked in great companies like FP for 10 years. तब जाके उन्होंने कंपनियां स्टार्ट की, they have made like sell out like big numbers, and then they're doing another startup now, and the way they work is so efficient, like they are in their 30s, इतनी चीजें तेज हो रही है, but there's no, how to say, like सब कुछ well managed है, like there's a proper balance between order and chaos. तो चीजें एकदम फास्ट है, but when you go through you feel like कि सबका system है, and that comes when you work in great environment, when you work with great people, right? That's my point. That's why जब मैं was when I heard this point I was like कि अच्छा अच्छा, maybe 10 और 12 में पढ़ने का कुछ तो एम हो सकता है या कुछ तो फायदा हो सकता है. What do you think? Okay, the thing is, first of all, I am an engineer who has passed 10th, 12th, and हाँ. college efficiently. The thing is, I did my college from a tier 2 college, right? And Okay. from Gandhinagar. That's the Okay. capital of Gujarat. Okay. Okay. It's one of the known colleges, but it's not an IIT or an NIT, Of course. right? But Okay. the thing is, do you think I am unhappy about not being in an NIT or IIT? Honestly, no. I was at the right place. I'll tell you why. And yeah, देखो, the competence is high, but that does not mean that even if you're not able to crack an IIT or an NIT, You're a तो तुम failure. कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में. हाँ, वो I'll tell एम you नहीं है. why. I'll tell you why. The thing is, if you, yeah, 10th and 12th is important because Hmm. that's the base of things. But there are a lot of people who might be weak and still they'll do well in life. हाँ, That's sure, on sure. how you have that vision, right? Or maybe you develop it with time. या आप हाँ, बहुत hard things से deal करते हैं and you come on some track, right? But the thing is, यार, it, one thing you should know, right? okay. If you go and search about this, हर IITN या हर NITN, I'm sure about this, हाँ, नहीं होता place. If you go in an NIT and IIT, हाँ. I am sure about this, and I'm not speaking anything wrong, right? I have been guiding a lot of people in this around me. कल को Some तो भाई केस तेरे पे like जाएगा. kids. ठीक देख है, ले भाई तू. देखो चीज ये है, हाँ अच्छा. देख लूंगा.
The thing is, IITs and NITs are very good. I won't say anything wrong about that. It's the premier institution of India. But the thing is, यार, that आप क्या समझते हो, गूगल अमेजोन क्या हजार हजार लोगों को लेकर जा रही है उधर नहीं से, नहीं, खाली एक या एक या दो। दो जन को लेकर हाँ हाँ, जाती है, पॉइंट में, हाँ। जिसकी वजह से एवरेज पैकेज बढ़ जाता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज, आजकल तो मेरा कॉलेज is Gujarat's one of the best college where startups are coming from. And SVNIT Surat is also good. It's an NIT. IIT Gandhinagar is also good. But we are competing with them very heavily, right? Just take example है मेरे कॉलेज का. That does not mean कि आप कोई भी कॉलेज से हो तो आप स्टार्टअप नहीं खड़े से कर सकते और योर माइंड इज नॉट ब्रिलियंट. बिकॉज आपका माइंड स्टडीज में अगर नहीं है, या आप इतने भी बुरे नहीं हो सकते हो स्टडीज में, राइट? कि आप एक जैसे फॉर मी माई कॉलेज, राइट, आई हैड क्लियर्ड समथिंग ड्यू टू विच आई एम इन दिस कॉलेज. ऐसा नहीं था कि मैं जस्ट एक सीट लेके बैठ गया हूं और समथिंग लाइक दैट, राइट? आई हैड क्लियर्ड समथिंग विद अ गुड मार्क्स, राइट? सो द थिंग is if you have that mind, like right now I'm 23, right? There are a lot of people who might be in an IITs and NITs, and to be honest, no matter any institution वो बोलती है 100% placements and all, there are very less institutions that are actually doing that thing. ठीक है, that is one thing you will have to understand, because some of the people will go for masters, let them be aside, but बहुत सारे लोग unplaced होते हैं. You might have seen a lot of news like going around that IITians and NITians are not getting jobs, right? Jobs का market में है issue, but the thing is, if you are competent, you will get a job. That's the thing, right? और ऐसा नहीं है कि आप IIT NIT में आपने बहुत मेहनत करके गए हो. If you don't work there, right? If you don't पुट योर हार्ट देयर और आप ये सोच लो कि मैं बस IIT NIT में हूँ अब तो क्या है, हो जाएगा करके, ठीक है, दैट्स नॉट द केस आल्सो, राइट? I belong from a tier 2 college. I am in working one of the best companies. I hope you can take that, right? JSW, that is actually called as Jindal. If you tell it to old age people or even our parents, they would know who Jindal is, right? I am working in one of the good companies in India, right? And I did it with a tier 2 college. काफी लोग ये कर रहे हैं. Things are changing with time. The thing is, इंडिया में एक और चीज यू वुड हैव नोटिस कि अब गवर्नमेंट जॉब्स, जो एक जनरेशन पहले इंपॉर्टेंस था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस धीरे धीरे लूज कर रहा है वो गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज देयर इज नॉट मनी. ठीक है, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट तो यार प्राइवेट जॉब्स में भी है, राइट? एंड मतलब क्यों नहीं है रिस्पेक्ट, राइट? इट्स नॉट दैट आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी और समथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज, आप कुछ भी करो, if you are interested in that, that's the best thing for you, right? It's not even about money for me personally, right? I did not ever want to go into government sector. That's the reason I'm in a private sector. ऐसा सभी लोगों का होता है, right? Many people, ठीक है. तो यार we'll have to understand this, and even you know this यार, बहुत common है. मैं और तू ही कितने different है, right? We are on this platform of us, but काफी differences होते हैं. You would have seen me that I did not have any background of sales, not even my parents, and marketing as a content writer also, but I've still done pretty good, right? I have clients also. I am an engineer also. So yeah, it's on you. Like I will tell that I wasn't that, like I was a good student 12th में भी, ठीक है, I did fairly good, but मुझे ना आज तक ये बुरा नहीं लगा कि मैं IIT NIT में नहीं हूँ. और ये जिससे भी तू पूछेगा ना, काफी हद तक लोग होंगे जो लाइफ में रिग्रेट नहीं करते. लाइक मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में, जब मेरे जूनियर्स आए थे, तो उसमें से एक बंदा था, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बहुत टेंशन में था, अरे यार मेरा नहीं हुआ यार, अब मैं क्या करूंगा लाइफ में, कैसे होगा मेरा. एंड द थिंग वाज that was due to his parental pressure कि अरे यार अब तो इधर जा रहा है, कुछ तो करना है, प्लेसमेंट लेना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है. Now he got placed in a very good company, ठीक है, he got placed in a very good company, and he is very happy. And उसने मुझे कॉल किया and he told me, I don't regret the decision now that I was not in an NIT or IIT. The thing is यार, लाइफ में सब सेट हो जाता है, you just go with the flow. तू पढ़, तू मेहनत कर, कि ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, तू मेरे को बता, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है? नहीं होगा ना कुछ हाथ में, नहीं होगा ना कुछ हाथ में, एडमिशन नहीं होगा ना अच्छे कॉलेज में. बट यार बहुत सारे लोग हैं जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, दे आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस. यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब पॉडकास्ट आल्सो गोइंग ऑन वेयर you will find like the templates written such as from a tier 3 college with zero like with unplaced person
who gets a 66 lakh package in Google or something, just an example like that, ठीक है. तो यार ये प्योरली तेरे ऊपर है, how you hone your skills and how you grow yourself, ठीक है. But your point is also not wrong. 10th और 12th में आपको ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप खाली बस 10th 12th करने के लिए कर दो, थोड़ा तो करना पड़ेगा. दैट इज समथिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. बट ठीक है, मतलब जस्ट गो विद द फ्लो. इतना ये टेंशन नहीं लेना कि मैं तो इंजीनियरिंग से हूं, मैंने तो काफी लोगों को देखा है टेंशन में, तो अरे यार ये नहीं हो पाया यार मेरे से, यार ये भी नहीं हो पाया मेरे से. बट लाइफ में काफी कुछ है. लाइक ऑनेस्टली मुझे तो आज ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है. मतलब दैट्स द थिंग, ठीक है. मैं चोरी तो कर ही नहीं रहा ना यार, मैंने जो भी कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ. As of now, I got placed by myself, right? I got placed in multiple companies. तो that means that मेरे अंडर कुछ तो capabilities हैं और सबके अंडर होते हैं. It's just that आप अपने आप को let down मत होने दो. Even if there's something wrong. And अगर 1% लोग IIT में जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब है 99% लोग जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं अपना? नहीं है ना यार, कुछ ना कुछ तो सब कर रहे हैं ना, ठीक है. देख 30% 40% तो 20-30% यार, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बहुत लोग तो बिजनेस वाले ही होते हैं, ठीक है, तो वो तो बिजनेस में लग जाते हैं. पर मैं तो 60% तो ऐसा समझता हूँ, 60-65% जिनको जॉब्स चाहिए होते हैं, राइट, ठीक है. शायद उनको 1-2 साल बाद लगेगा जॉब, शायद कुछ और MS या मास्टर्स समथिंग करेंगे वो लोग, ठीक है. तो हो जाता है यार. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीटेक 3rd ईयर कॉलेज से करते हैं, बट उनका प्रोफाइल पे वो लोग मेहनत करते हैं and they then going to one of the prestigious MBA colleges in India itself. There are a lot of this. It's just that you should go with the flow. That's the only thing. इतना ये नहीं सोचना यार, मतलब सोच के यार कोई फायदा नहीं लगता मेरे को तो फिलहाल अभी as of now, because मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ. एक टाइम मैं भी ऐसा ही था, बट अब नहीं. No, like you kind of described the same point that I did. It's just tangent अलग था. See, my point was like मेरा point था like the placement point is very fair, right? तो मेरा मेरा aim placement का नहीं था. It's that कि like this is something that I have realized. Okay, like since I have started work, ये जो भी चीजें कर रही हैं, I have got kind of in touch with few people and they responded this well and all. मेरे को realize हुआ कि at the end of the day you have to be competent, right? There's no denying to it. वो तो है, right? तो मेरे कहने का मतलब, but what if you get the chance to be around with even competent people, right? Same कि like मेरे कहने का मतलब कि सी द प्लेसमेंट का लेकिन हाँ, प्लेसमेंट का भी इशू तो हो रहा है, मान लो सबको नहीं मिल रहा है. मेरे कहने का मतलब कि you'll make money even if you go to IIT, maybe you don't do good enough. मैंने कितने लोगों से सुना है कि they were in the batchmate and 10 साल बाद they both are running a $1 million companies. दोनों ने पास नहीं किया IIT, right? मेरे कहने का मतलब कि you meet people in your batch who have something in them, who have grit in them, right? That's what I'm saying. ऐसा तो टीयर हाँ 2 कॉलेजेस में देख ऐसा है ना सब में कि होता है. एक हाँ इंडियन परसेप्शन बन गया है कि IITs NITs हैं, मस्त बंदे हाँ होंगे. हाँ पर मैं पर्सनली एज एन इंजीनियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो सब जगह फ्रेंड्स हैं. लाइक हाँ आई स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन बड़ौदा, इनफैक्ट द बेस्ट, ठीक है. yeah. सो आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर प्लेसेस जो काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से है, राइट. सो द थिंग इज इवन देयर परसेप्शन इज कि यार ये तेरे ऊपर तू कैसे चीजों को लेता है, राइट. एंड यार देख, फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ किड्स, ठीक है, वो जब तैयारी कर रहे हैं तो 11th 12th में फॉर एन IIT एंड NIT, यार अगर 1% मार्जिन है, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज आल्सो जो बने हैं, राइट. यू वुड हैव सीन कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मार्क्स एंड ऑल, राइट, बट इट्स अबाउट यार कंपिटेंसी तो है मार्केट में. बट ये भी चीज हमारे जनरेशन का यार अब मैं थोड़ा समझता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ी गलती है कि हम चीजों को कभी कभार फास्ट लेना चाहते हैं. हमें लगता है हम स्लो ले रहे हैं, पर तो भी वो फास्ट होता है कि यार अभी आई एम 23, बट यार मैं यार इतना ही अर्न कर रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा. बट द थिंग इज कंपिटेंसी होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को खो दें उसमें. इट शुड यार, जो होना होगा लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा कि हम बिना कुछ किए हुए रह जाएंगे, राइट. कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे यार. वी शुड नॉट लाइक, हमारे एज में काफी लोग हैं जो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, राइट, कि यार कैसे होगा. आई हैव सीन, क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने किया है, बहुत लोग लाइक देयर आर सम स्टूडेंट्स कमिटिंग रॉन्ग थिंग्स, डूइंग रॉन्ग थिंग्स आल्सो, ठीक है, ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज कि तेरे ऊपर है यार. अब कोई बंदा है वो कॉलेज में आके जाके मस्ती करेगा एंड आफ्टर दैट ही थिंक्स कि यार ही इज कॉम्पिटेंट एनफ.
यार ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो तुझे एक सीरियस वे में लेना पड़ेगा. बट if X person works in the best companies of India, right? Does it mean that he is 100% competent? यार सब में थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक होता ही होता है. ठीक है. अब मैंने एनआईटी के पेपर मतलब जेडब्ल्यू के पेपर में थोड़े मिस्टेक्स किए होंगे, ठीक है, ड्यू टू दैट आई डिड नॉट गो टू एन आईआईटी और एनआईटी. बट ठीक है यार, ठीक है, जस्ट गो अहेड इन लाइफ, things will fall in place. Abhi dekh, like you know my situation right now, my health issue, right? But do you think, or do you see that I am in some stress or something? No, there's no meaning of taking stress. I am out of the job world as of now for at least 2 months, nearly 2 months, right? But ठीक है यार, जो अपने हाथ में हम वो करेंगे. हाँ, सिंपल एज दैट. पॉइंट है. पॉइंट तो है भाई, पॉइंट तो है. यार अब इंजीनियर हो, थोड़ा तो तेरे को मानना पड़ेगा. हाँ, इंजीनियर हो यार, थोड़ा तो मानना पड़ेगा यार, थोड़ा सही Yeah, सही. bro. Yeah, bro. God. Also, you like definitely health issues kind of change the way you see life. वो तो हो जाता है. That I have seen with a lot of यार people. अभी तो मैं तो यंग हूँ यार, ठीक है, एंड फॉर मी हैविंग दिस एट दिस यंग एज. बट ठीक है यार, क्योंकि आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली, क्योंकि यार इतना कुछ फेस कर चुका हूँ मैं भी. लाइक आई हैव सीन माय, लाइक माय फैमिली में भी काफी लोगों का हेल्थ खराब हुआ था ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल. आई हैव सीन सच थिंग्स, सभी लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, राइट? एंड समवेयर और द अदर आई हैव बिकम अ बिट स्ट्रांग. आई नो कि यार ये होने वाली लाइफ में, ठीक है, देयर इज नथिंग इन माय हैंड राइट नाउ, इट्स माय हेल्थ. अब गया है तो गया है, बट हाउ कैन आई रिस्टोर इट, हाउ कैन आई गेट बैक ऑन ट्रैक? आई विल फॉल डाउन अगेन, मे बी मैं कुछ अभी फॉल डाउन हो सकता हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ. बट ठीक है, आई विल बैलेंस इट, आई विल डू समथिंग देयर. ठीक है, मतलब इट्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे एक चीज को ले रहे, राइट? बात तो है, बात तो है. Point है. Also, you mentioned कुछ time like when you were like kind of telling your argument, it was about the LinkedIn profile, right? कि बंदों ने प्रोफाइल बना रखा है, right? उसमें मेरे को एक बात याद आई. Like, tell me honestly, what do you think the situation of LinkedIn uh, posting is like in content in general right now? क्योंकि I have some controversial views, okay? What do you think first of all? I'll ask you to. यार कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली अब मुझे लाइक लिंक्डइन पे काफी टाइम हो गया, राइट? द थिंग इज, इफ यू पोस्ट इन एन एरिया और निश यू आर इंटरेस्टेड इन ना, it's not bad. ठीक है, it's something where you will connect with good people that you want to, and maybe you will see some people actually messaging you that you're doing good, you're actually posting something like this, it feels good to be connected with you, जो मेरे साथ होता है. But and even काफी और लोगों के साथ. But the thing is, like I can say this कि काफी सारे लोग LinkedIn को काफी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, and they are trying to make it a social media sort of an affair. मतलब they will post things like I talk to you about कि मतलब they are not at that age to actually post something, and they'll post it like anything. I've even seen people mixing memes with content. Like, How can that happen? what do you Means mean? Like, एक they'll have like background में they'll have a World Cup winning poster. Just an example, I remember it's one of the अच्छा, funniest one. And okay. उसपे कुछ HR का content लिखा हुआ है that which is a serious content. जो कि लिखा है वो सीरियस टॉपिक है, जो लिखा है वो सीरियस. हाँ हाँ हाँ, वही हाँ, मैं बता रहा हूँ. हाँ, जो पोस्टर है उसका, हाँ, उसमें बैकग्राउंड में लाइट करके हाँ. इट्स लाइक धोनी होल्डिंग द ट्रॉफी, एंड साइड Okay. में सचिन तेंदुलकर एंड युवराज सिंह, एंड इन द फ्रंट इट्स रिटन दैट एचआर हैव टू, आई डोंट रिमेम्बर समथिंग, बट कुछ एचआर रिलेटेड था. और उसका जो कंटेंट था ना, वो इतना लंबा था ना, उसमें आधा चीज ऐसा था जिसमें से 2-3 चीज मैंने पॉइंट आउट कर दिया गलत है. मैंने उसे पर्सनली भी मैसेज किया कि यार देख लो इसको थोड़ा, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू चेंज और समथिंग. रूड लग जाता है भाई लोगों को, पहली बात तो. मतलब आप मीम को कंटेंट से लिटरली मिक्स कर रहे हो. ओके, इट्स फाइन यार, आई डोंट फाइंड मीम पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन इज इवन वर्थ इट. ठीक है, Okay. क्योंकि आप उधर एक स्टैंड अप शो करने नहीं जा रहे या कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, हाँ, आप उधर सीरियस बिजनेस और मे बी समथिंग यू आर गोइंग टू सेल, maybe you are working on something, you are a working professional or you are in search of jobs. बट ये लोग इसको कुछ एक अलग ही डिमेंशन में लेकर जा रहे हैं, जो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब. ठीक है,
but they are doing this. Content is good, ठीक है, but how do you mix a meme with something, मतलब यार, that is something out of the box. So हैं ऐसे लोग, ठीक है, you will find a lot on LinkedIn, and you are totally true that it's controversial. Like it depends, and it's best you follow the people you want to. That's simple as that. इतना ज्यादा मत हाँ सोच. हाँ like the best part is like I'm gonna get views by offending people when I'm gonna post this on LinkedIn. And I'm gonna सही use में you. करने वाला है. Of course, bro. And I'm gonna use you as the bait. So, नहीं, but the point being like मेरे को इसको See, the thing process is, कैसे I'm करना telling हाँ something that's ट्रू a true thing. Okay, I'm not हाँ जो हो रहा है wrong वो on हो this. रहा है ठीक है, हाँ तेरे को and एग्री नहीं करना तो अलग बात है पर हो तो रहा मत करो. आई एम फ्रॉम द है प्रेजेंट जनरेशन. ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा हाँ वेर एवर आई फील इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज लिंक्डइन काफी लोगों को हेल्प भी कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, राइट? लाइक प्रीमियम्स एंड ऑल व्हाट्स या गोइंग या अराउंड, यार काफी हेल्प कर रहा है लोगों को जॉब्स में, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड. ठीक है, जस्ट एग्जांपल्स है. सो या दीज आर गुड थिंग्स आल्सो, बट अगर such people, I've even seen some professionals who will be like, LinkedIn branding में help कर रहा हूँ and all, and they are just age 17 18, ठीक है, and they'll post such heavy they are not helping bro they are not helping bro they are no 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 you're wrong they are not helping they are social media expert उनको लग रहा है नहीं कि वो हेडलाइन हेल्प में कर लिखा रहा है है. भाई हेडलाइन में लिखा है भाई हेडलाइन में तो लिखा है हाँ गो ऑन हाँ, हेडलाइन में तो ठीक है, लिखा है भाई helping people grow their account 10x या times. या 500 कलेक्शंस हाँ, सोशल कुछ भी मीडिया भाई एक्सपर्ट साहब. भाई साहब हाँ गो ऑन ब्रो हाँ यार, यही है. नहीं नहीं, इट्स ये राइट मैन. हाँ मैं भी कुछ होशो हवास में ही बात कर रहा हूँ, सो आई एम राइट वट एवर आई एम सेइंग, आई नो दैट. सही सही like the only funny thing that I'm finding is that the irrelevancy of photo and the content part for अरे me. I'm बहुत like, बहुत, एंड इनफैक्ट आई हाँ, हैव इवन टॉक टू दिस with people from working in Microsoft and big companies. Like I am connected to a lot of individuals now. मेरा personally भी काफी अच्छे लोगों से बात हो रहा है. I'm connected to good people, right? So indirectly or directly वो भी एक point raise करते हैं. So what we do is like specifically हम कंटेंट जो है, अपने एक ग्रुप भी है where there are only some selected people who actually write things on themselves and something that's related to their environment or thing they want to do in life. तो अगर हम वैसे लोगों को हेल्प करें ना, that would be the best thing. And if they also help me in the same way, they understand me, they know me, hmm, we have had meetings and stuff like hmm, that, that's the best thing to do. yeah, Why to indulge in such things, right? पहले आप कुछ खुद, मतलब अगर आपने फ्रीलांसिंग भी किया है ना, तो भी मैं मान लूं ओके, यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट यू वोंट गेट क्लाइंट्स लाइक दिस. इवन यू माइट इंक्रीज योर फॉलोअर्स, भाई साहब मान लिया, बट ये ना तुम्हारा बेस नहीं है. जब तुम्हें हेल्प होगा ना जिंदगी में, लाइक यू वांट टू गेट जॉब्स और यू वांट टू गेट समथिंग, यही लोग होंगे जो हेल्प कर सकते हैं. सम गुड पीपल ऑन लिंक्डइन. People will refrain from doing so because LinkedIn is going to be the future CV. Any HR or a company in the future, I feel that's happening even now as well, okay, कि it's going to be one of the important platforms. मतलब आपको LinkedIn maintain करना बहुत जरूरी हो गया आजकल, to be honest. got it, got it. Also, also with followers, like I don't think like followers is long-term game, bro. I No. think in future it's gonna be a community-driven thing. Yeah, You yeah, need to yeah, build your right. community. So that is something I'm lately been very interested. Since I've started this, I've been very curious to learn about community. So I'm Yeah. planning to learn about that. LinkedIn पे I don't think somebody's kind of building it a community. YouTube और No, Instagram there पे are हो रहा है. communities. ऐसा तो मेरे नहीं को है, there तो are I could communities. be unaware. That could be a thing. मेरे को पता नहीं होगा Yeah, वो yeah. तो हाँ that maybe I know it I take that back. हाँ because I take that back. I तो मेरे को am पता नहीं होगी. connected to a lot of people. हाँ So could be LinkedIn हो पे सकता अच्छा communities है, to be honest. There are people है. from Microsoft, Google, and stuff who are connected together. There are I'll tell you one of my personal stories. When I was in Noida some days back, there was one of these like meetups. I was also a part of it. I got to meet a lot of good creators and people who are on LinkedIn and doing great Okay. work. So I met some people who are even part of LinkedIn Creators Program.
And in fact, even I have cleared the first round of the same problem. So there's a lot to Okay. learn, man. There's a lot to learn. Yeah. But lately, the more platform that I'm enjoying the most is Twitter. या हाँ, ये बात सही है. ट्विटर क्या It's a प्लेटफॉर्म good, है भाई. must बस platform है भाई आई साहब. जॉइंड इट, नहीं समझ आया, छोड़ दिया, फिर वापस आया एंड नाउ आई एम लाइक ब्रो. लर्न फॉर कॉस्ट के टाइम चालू किया था ना, सच बात है ना. नहीं नहीं, और पहले से इन 2022 आई मेड लिंक्डइन एंड ट्विटर. आई मेरे को पहले तो समझ नहीं आया ट्विटर करना क्या है उस पे. तो बेकार के बेकार में कॉपी पेस्ट मोटिवेशनल ट्वीट डालना स्टार्ट किया. हाँ, वो मेरे से गलती हुई थी. गलती क्या, बस वही किया था, मुझे लगा वही करना होता है, तो फिर बंद कर दिया. एंड देन नाउ आई एंजॉय, like मेरे को I use mainly Twitter for two things, two to three things. Mainly is like I get all my Formula One news from that. तो वो है ट्विटर पे ऐसे न्यूज़ मिल जाता है, तो दैट इज ग्रेट. हाँ, तो आई गेट अपडेटेड ऑन ऑल द टीम्स कहाँ पे क्या हो रहा है. सेकंड थिंग इज आई लव द फनी मीम्स ऑन ट्विटर. ब्रो क्या मीम्स आते हैं ब्रो, लाइक पीपल लाइक, वो भी बेस्ट पार्ट इज लाइक मीम्स में क्या है कि इंस्टाग्राम पे जो मीम्स आते हैं दे ऐड म्यूजिक एंड वीडियो रेफरेंसेस एंड मूवीज एंड ऑल के. ये And ओरिजिनल होता है हाँ, और इट्स खाली विजुअल्स हैं, जो वीडियो नहीं है, हाँ देखने में भी हाँ. मजा. नहीं, और कोई कोई तो वो भी नहीं है, कोई कोई पीपल जस्ट ट्वीटेड ब्रो, इट्स जस्ट देम बीइंग फनी. वो बेस्ट लगता है मेरे को, वो बेस्ट लगता है ब्रो. हाँ, वो सही लगता है, यू रीड इट एंड यू लाइक ब्रो बहुत सही है, तो आई मेनली यूज दिस टू. हाँ हाँ हाँ. एंड द थिंग इज लाइक, थर्ड थिंग इज लाइक I found gem people like Novel, people like them on their thing, like Andrew Huberman, Jordan Peterson. ये सबको like you follow, maybe Elon Musk if somebody follows him. तो like I've heard is that. तो मेरे को उस चीज़ पसंद है. I bro, I like I am at a place where I uh, study things now. Like I am going through my college, but उसकी study is the my least concern. ठीक है, वो मे बी हफ्ते में 3 बार यार वो आई. भी कर लेना चाहिए मेरे. हाँ, it's not that I'm not doing it, it's not that I'm performing bad, it's just I'm doing it less, वो कम टाइम में. It's just I'm always been kind of smart with how to study, तो वो figure out हो जाता है. I'm doing okay with that, good to okay with that, तो I just study few times, 1 2 3 घंटे हफ्ते भर में मेरा काम हो जाता है. I'm being smart with that. तो what I end up studying is different things bro. Like it's very curious. मैंने ना क्या किया अभी, like I have bought like 6 7 books at once फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. एक इट्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, एक बायोलॉजी है, वन इज अबाउट मनी, वन इज अबाउट हिस्ट्री एंड अलग अलग चीज़ें. तो मुझको एवरी नाइट जो पढ़ने का मन होता है, पिक अप द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. एंड अगर वो मन नहीं होता है, तो व्हाट आई स्टडी ऑन यूट्यूब इज लाइक देयर इज अ प्लेलिस्ट बाय जॉर्डन पीटरसन कॉल्ड मैप्स ऑफ मीनिंग. दैट there's also a playlist if you by any chance are interested in philosophy. There's a very good playlist called Justice by Michael Sandel. वो है. I like reading about philosophers and all, like, और माइकल सर्जे, आई थिंक I might be pronouncing his last name wrong. तो वो है. एंड एट लास्टली जो रोगन, तो भाई अपना प्यार है ही. Right. Yeah, so the worst part is like sometimes I'm whatever age I am, sometimes Joe Rogan is in my head so many times that I have to ask some existential questions to myself. That bro, you are straight, right? So I have to ask those questions in mind. I'm like, bro, इतना जोर होकर नहीं होना चाहिए दिमाग में. You shouldn't be पर like, हाँ bro, I like his content very much. हाँ, he's definitely an inspiration. Like I have a fun story regarding him. जब ये स्टार्ट करने वाला था ना, तो मेरे मन में आया कि चलो एक बार जो रोगन तो पहला एपिसोड सुनते हैं. फर्स्ट एपिसोड ही हैज मेड लाइक 2000, ही इज नियर टू 2000 एपिसोड. तो पहला एपिसोड आई स्टार्ट जो 2010 या 9 में था, आई गेस, राइट. एंड आई वाज लाइक कि हाँ, पहला एपिसोड सुनेंगे तो बंदा फंबल वगैरह कर रहा होगा, राइट. उसका मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सकते हैं तो. मोटिवेशन मिलेगा कि हर कोई कहीं से स्टार्ट करता है. हाँ हाँ. तो जब पहला एपिसोड सुना ना ब्रो, लाइक एवरी नोशन दैट आई हैव गॉट स्कैटर्ड. लाइक वो बंदा इतना अच्छा है फ्रॉम द स्टार्ट. समटाइम्स आई फॉरगेट दैट दैट गाय इज अ यूएफसी कमेंटेटर स्टैंड एंड अप आल्सो कॉमेडियन, ये. स्टैंड अप कॉमेडियन. हाँ, so he's just good with speaking and with people. Sometimes I forget that. हाँ हाँ.
So when he started podcast, like from the very episode, he's just good, bro. Like Yeah, we're he there will so be. good. He He's just will हाँ be. having वो ट्विटर पे randomly कुछ कुछ tweet कर रहा है, कुछ कर रहा है. He's figuring out his He'll things. have He's a just team exactly talking. Maybe also. it was He'll completely have a something. team for And like that. just talk. हाँ, नहीं उस टाइम पे नहीं था, अभी है. या क्या पहले पता, कोई तो कोई होगा जो उसको अभी हेल्प है. कर रहा पहले होगा. He was into a he lot of had a things, I friend, I guess, guess. at that point of time also. हाँ, that guy was always very interested in technology. Yeah. So I assume कि maybe उसने he has also maybe initially kind of figured out the editing part by himself. So I wouldn't be surprised. क्योंकि कोई edits नहीं होते उसके एपिसोड में, कोई edits नहीं है. Maybe हाँ, if they हाँ, mean to लगता नहीं be है. तो हाँ, बस right. वो कटता है. Otherwise सब चल रहा है. तो maybe he just start recording बस upload कर देता है. So I like this content. Hmm. Definitely an inspiration. Definitely someone I listen to very frequently. Great jokes, by the way. He's not the best comedian, but हाँ, Yeah, definitely yeah. a good That's right. podcaster. That's right. Like no doubt. Yeah. Is it? I've always been good with studies, bro, from the start. So I'm just know how to figure out shit. So they सेम haven't यार, सेम है. मेरा भी कॉलेज में जाता था. माय कॉलेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन इफ यू कैन एक्चुअली लुक look it थ्रू द up. पिक्चर्स. Cool, बहुत I'll बहुत see. ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. एंड Hmm. इवन द इवेंट्स एंड ऑल, यू विल रियली एंजॉय इट वाला सीन है. मैंने आज तक किसी को नहीं देखा मेरे बैच में जो कॉलेज बंक मार रहा है क्योंकि उसका हाँ. मन नहीं कर रहा आने का है. मतलब वो एक दो दिन कभी ठीक है यार, मतलब बहुत ज्यादा एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना कि यार हाँ. 6-5 दिन कॉलेज आना करके चल एक दिन अभी ठीक है. बट आई हैव सीन पीपल अटेंडिंग कॉलेज क्योंकि हाँ. कॉलेज ही ऐसा भाई, Yeah. इतना ब्यूटीफुल है, ग्रीन कैंपस है एंड Hmm. यू हैव एवरीथिंग टू डू. 80% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है वो भी. बट 80%. रियली, भाई साहब. बट मैन, माई कॉलेज यार, यू विल जस्ट गो थ्रू दोस पिक्चर्स एंड यू लाइक यार ये कॉलेज है. दैट्स हाउ दैट कॉलेज सही वाज. है. एंड सही इसी की है. वजह से मेरा इंटरेस्ट भी हो गया एंड ड्यू टू दैट आई यूज्ड टू गो टू क्लासेस एंड ऑल. बट आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इवेंट्स, बीन हेड्स ऑफ वेरियस क्लब्स, headed the sports committee, sports में भी था. everything, I did everything in college. So like मैं एक इंसान इंसान तो नहीं बोलूंगा, इंसान तो हुई, बट इंट्रोवर्ट से मैं चेंज हुआ ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज बिकॉज आई गॉट अपॉर्चुनिटीज, आई ग्रैब देम. दैट्स इंपॉर्टेंट कि मतलब मैं चला गया बस कि यार चलना, देखते हैं क्या होगा, इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू बोल रहे हो. तो एक बेसिक सा इंटरव्यू दिया एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट इज व्हाट आई गॉट टू नो. एंड इन वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरव्यूज उन्होंने कहा यार ज्यादा आपको कुछ पता नहीं है बट आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, सो विल टेक यू. दैट एक्चुअली गिव मी अ बिट ऑफ हाँ. इंस्पिरेशन, एक Yeah. कॉन्फिडेंस आया कि यार ये आदमी मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, ठीक है, Hmm. तो अपन ये करेंगे. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली हैव बीन टू व्हाट आई एम टुडे. Got it. Got it. Men have this trait. Like I was listening to a podcast with there's a guy called Eric Weinstein. I don't Heard know his if you name. ever Yeah. heard his name. Eric Weinstein. Okay, he was I've on heard, Joe yeah, Rogan. Eric Wines. Cool, cool. Yeah, Eric yeah. Weinstein. Okay, he was on Joe Rogan. Cool, cool. So he was on Joe Rogan, and he was talking about one of the differences between men and women is that men under promise, sometimes under deliver, but women over promise and over deliver. I think if I'm getting it right. I hope I'm not getting it wrong. But he said something very great is that कि मान लो एक टेस्ट होने वाला है, okay, and you need to get 10 points for that to pass. मतलब like you have to do something, but you have 10 qualities होने चाहिए. उसमें से a men have only 6. They will still take the risk of taking that exam. कि चलो देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, right? With women is that if they won't have like 8 or 9, even if they have 8, there's a chance they will go like, I'm not, ये it's not तो चीज है. abusive, it's just they're part of nature, right? Like if हाँ ये तो चीज है. If they had 8, they will be worried कि अच्छा 2 points कम है, will I make it or not? Like when men is like only 4 at 4 or 5, they were like चल ना देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. Which is when I heard this idea, I was like okay, okay, that is bro. And it's all, and he kind of gave a biological reason behind it. It's like the how women biologically they have to take care of children, so they have to be 100% good at their job, right? In that sense, why बट वो बट evolve. बट अब बहुत चेंज हो गया यार. इन आवर प्रेजेंट हाँ 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 जनरेशन यू हाँ. विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन. भाई हम्म. मतलब ऑनेस्टली मैं हम्म. ज्यादा वुमेन ही देख रहा हूँ इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स. द That रीजन is टू दिस great. इज, यस यू माइट बी ट्रू कि दे टेक
एवरीथिंग टू सीरियसली यार, मैन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ लाइक हाँ मैंने भी इट्स लेते नॉट हैं। दैट वे, बट यार लाइक वो परसेप्शन जो था ना एक कि हम्म। वुमेन तो क्या है यार, मतलब शादी करा दो एंड ऑल, दैट हैज चेंज्ड अ लॉट, दिस इज लाइक रियल नाउ, ओके। ठीक है, हाँ मतलब हाँ 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 काफी जगह है ये एंड हाँ ऑल, हाँ हाँ लाइक हाँ 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 इवन आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस नियर यू ओनली, सो है ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ 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 बट है, ऐसा है। ऑनेस्टली मतलब काफी चेंज हुआ है भाई साहब, हाँ काफी ऑफ चेंज. कोर्स I ऑफ am कोर्स। from that place, not in my family, but I know some families, some of my friends whose हाँ families या actually was into all this कि यार लड़कियां हैं शादी करा देंगे जल्दी and all. But this has changed with time, ठीक है, and that is a good thing also, ठीक है, but वो point सही है कि family देखना and all, but अब नहीं काफी सारे फैन। लोग हैं, हाँ 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 yeah, नहीं। like this, yeah. हाँ 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 नहीं। Go on, go on, go on. नहीं नहीं like नहीं, I get your point. I was not saying that कि cultural impact क्या है. It's just he shared a point. हाँ तो like I think I get your cultural point. हाँ he didn't. कर रहे हैं यार, even families also, if they have kids, young kids ना, they'll like both of them work, and they'll even take care of the kid, they'll find a way out. तो यार मतलब They should. proud moment है even for Indians, especially in India, it's changing a lot. Yeah, that is In true. India it's changing. That And is. actually, like in IT sector, if I see these events such as women for code, and a lot of other events are there, right? A lot of women are actually creating communities for themselves ना, तो Mhm. वो भाई एक अलग ही चीज है, like they are standing out. Good things also. Which is great, which is great. हमने भी किया है यार, हमने भी किया है. More power to you. हाँ of course of course. नहीं like अभी narrative हो रही है, like we're talking about women, something more power to them and us too. Like no, I get your point. I totally agree. Yeah. Like first of all when I sat ना, I thought कि वो जो, and tell me if I'm wrong, जो टी-शर्ट में जो मार्क बनाया ना, I thought it's the mark of JSW. Is it right or पर पता नहीं फॉर wrong? क्यों, मैक्स, पता नहीं क्यों, for my head I was, for I don't know why it kind of that is lगा per कि for came. max, वो it's a लगा like sporting performance. brand. अच्छा Yeah, परफॉर्मिंग ब्रांड। I कूल love this brand कूल personally, कूल and अच्छा इसलिए I'm in this. अच्छा And actually, I can't wear like या tight clothes as of now. तो या ये मेरे को थोड़ा loose है. That's या why. कंपनी का नाम क्या बोला, फिर से बोलना। ASW, नहीं नहीं ये इसका टी शर्ट पहना है per for so max. perform max, if marketing client sorry marketing employees listening to this, we are doing free advertising. You can always call, you can always call you. Yeah, we can all, you can always drop an email for brand collaboration. I'm open to it. I have, yeah, I have good 19 followers who can might buy a product. So yeah, that's cool. Bro, ring light लिया था, रील इस पूरे बना रहे हो नहीं? एड रिंग क्या रिंग क्या लाइट क्या? जो लिया है तो अभी लिया यार, बिल्कुल अभी लिया, क्योंकि थोड़ा फ्री टाइम मिला, बट ड्यू टू फिजियोथेरेपी सेशंस एंड ऑल, आई एम नॉट एबल टू सिट मच. अभी आई एम एबल टू सिट अ बिट, ठीक है, बिकॉज दिस चेयर इज गुड एनफ फॉर मी, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे फिजियोथेरेपी with me is happening in such a way that I have to get straight as well, and जो posture change हुआ है, it has to get better, right? So what happens, it hits at the in this area, because everything is connected, right, through your brain and through your neck. So I'm not able to even focus on things. ऐसा हो रहा है मेरे साथ काफी बार, but I'm taking it chill because I know it's a period of some 3 to 4 months. तो ठीक okay है. okay God God great man great. Do you think the cooking is good? Yeah. Sometimes I go in silence in conversation, bro, and I address this in every podcast I do. हाँ, like I कभी कोई chill हो जाता है, then you have a natural end to a topic. So I like it. पूछ लो यार, जो पूछना है पूछो. No, you can, if you have something, even you can ask, like it's not like an यार, interview, it's a मतलब podcast. एक हाँ चीज मुझे अच्छा लगा, लाइक हाँ most of the people won't even know how you and me are interconnected, right? हाँ So हाँ uh, हाँ हाँ
secret. That's a Right. secret. But हाँ थोड़ा जाओ सा जाओ बता देता हाँ हूँ. go on, हाँ Just because हाँ go on. like it's not only about connecting with people, but for me, you know this, that how I am, right? मतलब I am someone who gets angry at times, but yeah, I am always there वाला scene है मेरा, ठीक है. And even if I talk about Aditya, he actually like worked as an intern with us at Learn for Cause, and like what I like, a lot of people who have worked under me, he was one of the best. The reason was that he used to give his best no matter what happens, what are the situations, and that's a good thing, right? Like a lot of people, and that's why even we are connected even now, right? And we share a good, healthy friendship, right? And we are, these are the things that actually Yeah, yeah. like, it's a feel good factor, because you might not have even like met that person in like face to face, but you still are friends, right? Like just for an example, Ashirwad and me, Mm-hmm. we did not meet each other. Mm-hmm. मतलब काफी हम ज्यादा नहीं मिले, मतलब फेस टू फेस तो मिले ही नहीं थे, ठीक है. He was in Mumbai around Okay. my job place, Hmm. and we met Hmm. once. So it was good to meet him. That like by knowing him for such a long time, मतलब एक दो बार अगर आप किसी से बात करो ना, so you don't get to know the actual nature of that person. But with time, when you are in conversations and you see a lot of situations, ना, then you get to know, अरे हाँ, ठीक है, now I know this person better. So it's Yeah. like it's Yeah. been good. There are good things also that have happened during the COVID time, and we made friendships, right? I guess you also are friends with a lot of people at Learn for Cause, right? So man, that's a good thing after all. Yeah. Yeah. So much validation for a day, man. Like, but I'll repeat this part and sometimes listen to it. Okay, okay. अच्छा है, ऐसे वैलिडेशन मिलता रहता है ना, ठीक रहता है, इंसान को बहुत जरूरी है. अरे आपके एक सेकंड. Yeah, got it. Come back. Yeah, yeah. नहीं नहीं सही है, बस बस I think I'll कभी कभी I'll just call you out on Instagram and just ask you to make a validation proof, full proof, video, and then I'll put it on my story. देख भाई, आदमी देख, genuine compliment है, मैंने नहीं बोला. हाँ यार, ये जेन्युइन था, ठीक है, ये हाँ जेन्युइन है. हाँ 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 हाँ, You नहीं know बोला how the Instagram वाला जो situations होगा. were, na? You remember the हाँ situations, हाँ right? yeah And yeah yeah कैसा था? So I hope even you would agree to this, that I'm speaking it very genuinely, right? yeah yeah, of है course यार, of बात course. है. जो है वो है. जो है वो है, और गलत बोलना ही क्यों है किसी के बारे में जब सही में है भाई, ठीक है. हाँ जब है. और इतने टाइम काफी लोग होते हैं जो इंटर्नशिप के बाद they'll be like, अरे हाँ, मैं तो तुझे नहीं जानता, sort of, right? But Yeah there are some people like you, there are some people like Rajvi also, for example, and others like Ashirwad, yeah Saurabh. yeah. I am still very closely connected to them like anything. So भाई अच्छी बात है ये तो. I अच्छा. made some good friends, even in fact family is what I'll tell, because Learn for Cause एक family जैसा ही था ही हमेशा से. हम्म. बात तो सही है. बात तो सही है. But यार सेल्स में मजा आता था यार, हाँ हाँ तो. जो भी बोल यार, मजा आता हाँ था, ये बात तो है. यार, ये बात तो है. सेल्स ने मुझे चेंज किया एज अ पर्सन, ठीक है. सेल्स इज वन ऑफ द थिंग्स दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस टू दिस. मतलब सबसे पहले तो ये था कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर आया, क्योंकि मैं बात तो बहुत कर सकता था, बट मैं काफी ज्यादा ऐसे ओपननेस में किसी से भी रैंडमली नहीं बात कर पाता था, बट दैट हम्म. चेंज्ड. The other thing was that due to this, I started connecting with a lot of people. I was open to learning much more than what I was. So हम्म. sales India mein is a very like, people take it in a very negative way, but the thing is it's the other way around, because you'll have to just, even if you think about it, there, one of the most important thing is, no matter if you have a product or if you are into an IT thing or something, if you don't have people who are doing sales now, you don't have money, right? If you don't sell, if you don't sell your product, or like कोई भी product आप कर रहे हो ना, if you don't have a salesperson or a marketing team, there's no meaning of the product also. So you'll have to respect that, and there are a lot of organizations who are doing great just due to sales. ठीक है, so sales has to be taken very positively. It's on you if you're interested or not, but speaking about a specific thing in a wrong way is not right. Right, वो वाली चीज है.
So man, it's interesting also. ठीक है, there are यार, no matter any profession you are in, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगती, but you are still in that profession, right? Yeah. Just the same way sales. I am not into sales professionally as of now, but Yeah. I respect sales because it changed me. ठीक है, Yeah. so I always tell to people also कि यार, एक बार, एक ही महीना सही सेल्स जाके सीखो, कोई अच्छा मेंटर लो या किसी ऐसे जन से जुड़ो जो आपको सेल्स के बारे में थोड़ा बताए. यू गेट टू लर्न समथिंग दैट्स वेरी पॉजिटिव. Yeah. तो इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो. दैट चेंज्ड मी मैन पर्सनली. मैं टाइम पास में ऐसे एनरोल किया था स्कूल में एज एन इंटर्न, बट I got interested a lot. I'm Mm-hmm. still connected to them. It's one of the best things that happened to me. So Anupam, you led a team of sales, right? In a startup. You learned about startup, as you said. Sales and marketing. Sales and let me finish. Let me finish. I have a question. So it changed you as a person, right? So how many girls have given you number, bro? After because you are able to talk now, are you gonna reveal that the magic number? No, 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 no No, no, number no, भाई. no, no number. नहीं है भी नहीं भाई, और हम है चाहिए अभी नहीं. भी नहीं यार. Because Oh, as of now, like you no, so no, you're no, not no, into no, it. So totally, you're man. not into it, I guess. I refrain from this totally. The Okay. reason is कि I'm 23 right now, and I'm in that part of my life where तुझे भी realize होगा when you are in this situation Yeah. that Yeah. girls, ठीक है यार, it's not bad, ठीक है, to Yeah. be in a relationship and all, Yeah. but Yeah. थोड़ा सा you'll have Yeah. to Yeah. focus on your Yeah. career also. So Of course. I don't feel कि it's something wrong, but I don't want it personally, that I'm sure about. तो वो वाला चीज है बस. Yeah. Yeah. Cool. Yeah. Yeah. You have maybe taste in men. I don't know. नहीं 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 यार. But ठीक है, no, सही है, सही है. No, like this, I'm not being judgmental, Yeah, by yeah, the way. Just letting you know. And yeah. No, but ठीक है, like I think everything has its necessity and desire. Like necessity, it's the phase. जिस phase में हो उसके हिसाब से चीजें जरूरत होती है, which is fine. Like हाँ, like टू काइंड्स sometimes ऑफ I पीपल है ना. think at अभी मैं some जॉब कर points रहा हूँ तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. एक बंदा बोलेगा अरे यार अच्छा ठीक है, है कि आई एम ठीक है. सिंगल, आई एम एबल टू डू थिंग्स आई लाइक, आई एम एबल टू बाय थिंग्स फॉर माई सेल्फ, एंड माई फैमिली इज हैप्पी. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा बंदा ये भी होगा जो बोलेगा अरे यार फैमिली भी सही है, अरे यार गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मतलब स्कूल में भी नहीं थी, मैं इंजीनियर हूँ यार, कॉलेज में भी नहीं थी, क्या करूँ यार जॉब में भी कि क्या चल रहा है मेरे साथ जिंदगी में, ठीक है यार क्या करूँ, मेरा नसीब ऐसा ही ये है वो है. तो है यार, परसेप्शंस लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, तो होता है. I think like for फीलिंग्स the हैं मतलब इंसान में. I think like for the my reaction would be to the first person is that कि if you feel like you are chill about being single, so stay single. There's nothing hurry in it. And the second guy, if you think that you are not getting girlfriend, go ask someone out. Like don't cry about it. Be a man and try to सादा have a थप्पड़ ही खा लो conversation. अगर आपको Simple as इतना that. इंटरेस्ट है तो. Right. सेल्स ही हो जाएगा, थोड़ा अपने आप को Like well, girls are usually nice, bro. Girls are usually nice. From my experience, they are usually nice, bro. If you know how to speak, if you know you don't, if you're not a creep, it's a that's a very different difference. thing. Like you Don't tell try to like you creep. stalk Yeah. her or something like that. तो वो तो भाई साहब नहीं. Yeah. But ठीक है यार, normally no one is bad, right? Till the हाँ. time you respect someone, they are going to respect you हाँ. वाला thing है. But but जब भी मेरी बात होती है, I always encourage someone to do it rather than not do it. That's my personal preference. Like not preference, like a personal decision that I make. I just realize that uh, the whole narrative around dating in India is that people don't teach you how to build a healthy relationship or to maintain it. And when you become at 30 years old, you realize you never had a relationship, you don't know how to talk to a girl, and suddenly you feel that अब क्या करें? So it's better to kind of learn how to have friendships, how to have partner, how to it's also helps Bro. things are changing, हाँ changing हाँ सबसे ज्यादा वो हमारे जनरेशन में ही भरे हमारा हुए हैं नहीं जनरेशन भाई हमसे ज्यादा जो अभी हाँ मेरे को तो लग रहा है एक फोर्थ जनरेशन भी आ गया है भाई साहब, जो आजकल के बच्चे हैं ना, लाइक फोर्थ सोशल हाँ
social media expert. Do you mean social media expert, Anupam Pandey? Do you mean social media expert? Seriously The speak, person on नहीं LinkedIn, do भाई you? साहब, अच्छा I'll अच्छा हाँ seriously speak about this. हाँ हाँ कि अच्छा अच्छा like these kids, हाँ we did not हाँ even know how to use the television remote when we were 3 or 4 years old. नहीं मैं नहीं मैं हम स्मार्ट थे भाई हम अरे स्मार्ट थे मान रहा हूँ नहीं मैं, नहीं हम पर हाँ भाई भाई आईपैड लेके, हाँ 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 भाई फोन लेके भाई गेम्स खेल रहे हैं, खुद से हम्म खोल ले रहे हैं, मॉम डैड को नहीं आता पर भाई वो कर लेंगे। हम्म ऐसे हाँ हैं आजकल के, अभी जो नया जनरेशन आ रहा है ना, दे आर गोइंग टू बी अ हाँ बिट मोर फास्टर देन अस, ऐसा मुझे फील हो रहा है अंदर से अभी। हाँ ऑफ ठीक है, कोर्स ऐसा फील हाँ हो जाएगा अभी। हाँ ऑफ कोर्स हाँ ऑफ कोर्स they will be good at technology. I don't know about other things, so I don't know about other things, but technology mein they will वेरी be better. बेटर। So yeah. So we talked about like 1 hour and 15 minutes almost. What do you say? We should wrap this up? हाँ, but like अब मेरे को भी जाना है कहीं पे and you have to also आई leave हैव in नो half an इश्यूज। hour. So for today, हाँ. ओके। So let's wrap this up for today. So Mr. Anupam Pandey, thank you for coming to Inexperience. Same here. It was We had a great great to come here conversation. and Yeah. actually have a conversation with you on something very हाँ different. हाँ जो yeah, वो होता है लोगों के साथ, हाँ बट हाँ अभी तक नहीं हुई एक है प्लेटफॉर्म पे हाँ यू आर I कमिंग अप have विद। this हाँ I have this magic, you know. I bring out. I have this magic, you know. Like I bring the deepest things from people. You know, you like magic है भाई क्या करेंगे लाइक charm यू है भाई सीरियसली टॉक सो हाँ चिल गॉड ऑन गॉड दिस स्टफ, तो भाई अच्छा है। एंड आई हाँ possibly even wish that you get more and more people coming to your channel as well, because yeah, if we like I personally, if I don't support my mates, my people, then कोई मतलब नहीं है ना मेरा। सो बट सीरियसली यू आर डूइंग ग्रेट स्टफ, एंड आई गेस everyone should go through your videos. It's like good, and like you are adding some flavor of yourself, right? That's more important, because YouTube पे तो बहुत सारे creators हो जाएंगे, you'll find a lot of people just posting things yeah randomly, but yeah you're planning it out. You yeah come with some plan, which does not even seem like a plan, and you have your own way to carry it out. So yeah nice stuff, man, nice stuff, yeah and I would thank you totally promote this। yeah thank you हो गया, हाँ अरे अरे, कल के लिए 1 महीना का वैलिडेशन हो हो गया गया तेरा मेरे पास टेंशन। सही है एक महीने का नहीं नहीं एक महीने का हो गया बट नो थैंक यू इश्यूज। मैन थैंक यू फॉर डूइंग बाय दिस बाय, टेक केयर। ठीक है